A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. In today's lecture, we are going to discuss about consumers equilibrium from the chapter Consumer Equilibrium in Difference Curve Analysis. The very first topic of today's lecture is slope of budget line. Previously, we are done with the discussion of budget line. What is budget line? It is a line showing the different possible combinations of two goods which consumer can purchase with given income and prices of the commodities. Now, the topic is slope of budget line. If we talk about the slope of budget line, the formula of slope of budget line or the price line is delta y upon delta x. Now, the budget line is also known as the price line. We have discussed it earlier. So, we can see the slope of budget line in the diagram. In this, you can see delta y and delta x is calculated in the numeric forms. Delta x is 5 and delta y is 10. So, in this condition, the slope of budget line will be delta y, that is 10 upon 5, that is the 2:1 or 2. ठीक है. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज़ कांस्टेंट. अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन की तो हमेशा कांस्टेंट रहता है. वाई? बिकॉज द प्राइस लाइन इज़ कांस्टेंट. जो प्राइस लाइन है वो कैसे कांस्टेंट? दैट मीन्स द प्राइजेस डू नॉट चेंजेस वाइल वी आर स्टडिंग अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द शिफ्ट ऑफ बजट लाइन. Budget line shift forward when income of consumer increases, prices are assumed as constant, and the budget line shift backward when income of the consumer decreases, prices are assumed as constant. What is the shift of budget line? It is the change in the position of budget line from both the axes due to change in the income of the consumer. Here the prices of the commodities remain same. We can take an example. In this schedule there are 3 columns. The very first column, that is when income is 60. In this the good 1 and good 2 consumption is given. Thereafter the second condition, when prices increases from 60 to 120, तो condition क्या हुई? good 1 और good 2 दोनों का consumption increase हुआ है. And thereafter the third condition, when price decreases as compared to previous, क्या हो गया? पहले इनकम 60 थी, अब कितनी हो गई? 30 हो गई. एंड ओबियसली द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स, गुड 1 एंड गुड 2, क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ. ठीक है. सो व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम, जैसे इनकम 60 से 120 हुई, ओबियसली जो हमारी बजट लाइन है दैट विल शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट होगी. क्यों? बिकॉज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस कंडीशन नाउ वी विल बी एबल टू कंज्यूम मोर ऑफ द गुड 1 एज वेल एंड गुड 2 एज वेल. But when price will decrease, income will decrease, that is 30 rupees, in this condition there will be a backward shift in budget line. Why? Because in comparison to the previous situation we will be able to consume less quantity of good 1 and good 2. Now we can see this in the diagram as well. You will see the diagrammatic presentation of shift of budget line over here beta. You can see 3 lines. The very first line, that is the AB line in the very mid, that is the basic situation when the income of the consumer is 60. Thereafter, as soon as the income increases, the budget line shift forward, and now the new budget line is the CD. You can see over here it is above than the A and B, that is the line CD. And if the income of the consumer decreases from 60 to 30, obviously the budget line shift backward and the new line is EF, and that is drawn from the green color. So when income will increase, budget line will shift forward, and when income of the consumer will decrease, budget line will shift backward. Now the next topic, that is the rotation of budget line. We all have discussed earlier in the earlier chapters what is a rotation. When any of the diagram changes its position from any of the single axis, that is known as rotation. So see here, रोटेशन ऑफ बजट लाइन हैपन्स व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज. जब कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी तो यहाँ पे रोटेशन की कंडीशन होगी. नाउ द change in price, it can either be increase in the price or it can be the decrease in the price. So see the further conditions over here. There can be the following conditions in this regard. The very first, that decrease in price. There are the chances, probability that the price of good X decrease and the price of good Y decrease. ठीक है.
when budget line when price of good x and y will decrease, the budget line will rotate to right. budget line क्या करेगी, राइट साइड रोटेट करेगी. ठीक है, अगर हम लोग इसको और फर्दर क्लियर समझने की कोशिश करें तो वी कैन सी द डायग्राम ओवर हेयर. In the very first diagram, just you can see good x. Initially the budget line was AB from the sky blue color. Thereafter, as soon as the prices of good x decreases, now we can have the more x's of good x commodity, है ना, हम x commodity को और consume कर पा रहे हैं. And as a result the position of budget line rotate from x axis from AB to ABR. क्या हो गया, ए बी से ए बी आर तक क्या हो गया, रोटेट हो गया. ठीक है. इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द गुड वाई एज वेल, अगर वाई की प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. अब हम वाई को कंपैरेटिवली ज़्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी वाई एक्सिस पे जो बजट लाइन की पोजीशन थी वो ओ ए से इंक्रीज होके ओ ए आर तक पहुंच गई है. ठीक है. सो इन बोथ द कंडीशन इट इज़ शिफ्टिंग टू द राइट एंड दिस इज़ द राइटवर्ड रोटेशन ऑफ बजट लाइन. Now the second condition, that is decrease in the price, it will be just opposite condition of decrease in price. अगर increase in price की बात करें तो ये एकदम opposite condition होगी of the decrease in price. Obviously there was the rightward rotation, so here will be the leftward rotation. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि good x और good y के price increase हो गए. As soon as the price of x will increase, we can have only less quantity of good x in comparison to प्रीवियस सिचुएशन. एंड द सेम थिंग विल हैपन विद y एज वेल. अगर y के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में y का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. एंड एज द रिजल्ट देयर विल बी द लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन द बजट लाइन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रोटेशन एंड द शिफ्ट ऑफ बजट लाइन. रोटेशन में क्या है, it happens when the diagram changes its position from any of the one axis. And what happens in the shift, the position of diagram changes from both the axes. Now we are coming to the last topic of the chapter, that is the consumer's equilibrium. If we talk about the consumer's equilibrium, we have discussed it earlier as well. It is a particular point where consumer is able to maximize his satisfaction. That particular point is known as consumer equilibrium. But this is in the very general verbal words. When it comes to the indifference curve analysis, so there are following two equations that you can see over here. Two equations of consumer equilibrium are here. The very first, MRS x and y. MRS we all know, that is the marginal rate of substitution for x and y. जिससे क्या बनता है हमारा बेटा, इंडिफरेंस कर्व बनता है. क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. When MRS x and y is equals to PX PY. ठीक है, किसके बराबर हो, पी एक्स पी वाई. और पी एक्स पी वाई क्या है, दैट इज़ द स्लोप ऑफ बजट लाइन. इन दिस चैप्टर वी हैव रेड ओनली टू टॉपिक्स टिल राइट नाउ. पहले हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन पढ़ा. तो इसने बताया जहाँ पे इन दोनों का जो स्लोप है वो कैसा हो, सेम हो. किसका, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट wherever the first condition is applying, जहाँ पे भी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट में इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए. कैसा होना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स. सेकंड कंडीशन को सिर्फ वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है. जस्ट सी इट डायग्रामेटिकली. वी कैन सी हेयर बेटा, अ डायग्राम इज हेयर. द प्राइस लाइन इज PQ, that is drawn from the dark blue color, and thereafter indifference curve is shown from the sky blue color, that is a light blue color. So where the first condition, that is the MRS x and y is equals to PX PY. that means अगर मैं बहुत सिंपल बोलूँ बेटा, तो जहाँ पर हमारा जो बजट लाइन है और जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ अ पॉइंट E, एंड now at the point E the first condition is fulfilling. Now we will see the second point, the shape of PPC. क्या सी condition बेटा, ये देखिए, the shape of indifference curve must be convex, and wherever it is intersecting at point E, अगर हम इसको यहाँ से origin से देख लें तो हमारा point कैसा नज़र आ रहा है बेटा, convex नज़र आ रहा है. that means both the conditions are fulfilled over here. ठीक है, देखते हैं आगे इसने क्या बताया. the equilibrium is struck at point E where MRS x and y, that is marginal rate of x and y commodity, is equals to PX PY, that is the price line or the budget line.
The rate at which the consumer is willing to substitute X for Y coincides the rate at which market allows the consumer to substitute for X and Y. जहाँ पे हमारा marginal rate of substitution X का Y के लिए और प्राइस का रेशियो किसका X एंड Y का क्या बन जाता है बेटा, इक्वल होता है. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक. सी फर्दर, एट पॉइंट ई द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस द 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X. ठीक है. अगर हम ई पॉइंट की बात करें बेटा, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y. ये Y होगा बेटा, Y नहीं होगा. ठीक है. 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X. And the same is the price ratio 2:1, and that is why it is the point of consumer equilibrium. So this is all about today, and here chapter also ends beta. What we have discussed today, we have discussed about the formula of slope of budget line, that was delta Y upon delta X. Thereafter we are done with the discussion of shift of budget line, that is either in the increase in the income of the consumer or due to decrease in the income of consumer. Thereafter we have seen about the rotation of budget line. अगर हम लोग बात करें rotation of budget line की, the first condition was increase in price and the second was decrease in price, and the last we have seen that is the conditions of consumers equilibrium, and then we have seen that in the form of diagram as well. This is all about this chapter. God bless you all. Thank you very much.